हाई कोर्ट में फाइल की, उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की। वो एक्चुअली वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, चेक तो कर लें। जी, बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है, बट नहीं वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है। उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी, ऐसा नहीं। जो मैं जिसका was on a lighter note. I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. Just point out, नहीं कह रहे हैं, but actually para 20 में जिक्र किया। Certificate में नहीं है। 20 Certificate में कह रहा हूँ। Paragraph 20 में। 20 में बात आ जाए। एक सेकंड। नहीं पेज बता दें पिटीशन का पहले। Page 38. कैंसिलेशन मेंबरशिप का भी बता दें। पैराग्राफ 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019 and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmit its result along with all required documents including form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसी ज़मीन में इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया। Page 50 पे देखेंगे जनाब certificate। Lordship, I've just received Page 50. Page 50 पे जो certificate है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court. वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ जी। एंड पेज 602 पे जनाब फैसला इसका, इसकी पिटीशन लिखी थी। वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज़ है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act 2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case, and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटीशन भी बता दें किस पेज पे है? ये पिटीशन वाज 585 सर। जो इधर लाहौर की नहीं, इसका ये जो 11
इसमें। Are you sure? अच्छा, अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटीशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब, on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Again, it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify. PTI or Pakistan? PTI Constitution. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बताता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. नहीं, apologies. I think there's a लास्ट 2 पॉइंट सर, प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर। और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया। सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट। आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट। 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या affiliation एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए। ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं जी, general elections. I've not understood the point. Sorry. It was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू
अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है। तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है। पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है। ठीक, जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता जी। That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the I cannot answer that. लेकिन एक और सवाल में जब Badr was kind to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी। ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ। सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017, in the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से, खैर ये तो ओके। और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सबसेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट। बाकी अटेंडेंस। और इसी तरह से सब सेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं। The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you. Thank you. किधर हैं जी सर? आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से, पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले। किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है। ओके। जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था, तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था। तो he's earned his keep. Always more than grateful. Thank you. Eat anything, my lord? You just want to right of reply is restricted to the points other side is raised, including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes? Chronology first. My lord, this is a chronology which is just being given. This is just to save your lordship's time. Khan Sahab ko bhi dijiye. जी। I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें। My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties, 13 or 30? 13 जी। इस वक्त बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं समाअत सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ के वकला अपने दलाइल दे रहे हैं। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, मीर अली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का मुतालबा। फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान मारा गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, मीर अली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है।
फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। सलमान, इस ऑपरेशन के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा के 2 इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहली कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में की गई, जो कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसके अंदर इंतहाई मतलूब या हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द जो है वो कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान शामिल है और इसके अलावा उसका साथी साजिद उर्फ सरकंडी जो है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारा गया है। दूसरी कार्रवाई जो है वो एक मुश्तरका ऑपरेशन था, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने किया डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में, और इस इलाके में होने वाली कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इसके साथ ही ISPR ने बताया कि हलाक होने वाले दहशतगर्दों से वेपन्स, एमुनेशन और दीगर जो बारूदी मवाद है वो भी बरामद हुआ। और ये दहशतगर्द जो है ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, हमलों में मुलविस है, बल्कि आम शहरियों के खिलाफ भी मुतअद्दिद टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातों के अंदर भी इनका हाथ था। और इस वक्त इन दोनों इलाकों के अंदर जो एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और मुकामी आबादी की तरफ से भी बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों का, और सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाअत जारी है। उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट। अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो। सर, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold an elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा, उनका 5 साल नहीं हुए थे? 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे। उस 5 साल के अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई है। कॉपी दे दूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है, गॉट इट माय लॉर्ड। Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see, file किधर गई file? Election Commission please order it. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which आप इधर आ जाइए ना सर, I have to move everything. The Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your lordship's. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. 2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. और आपने एक reported judgment भी तो दिया था। जी सर, दो दिए थे। कल दिए थे ना आपने? जी सर। वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में। जी सर। हाँ, वो भी लगे हुए हैं। 2 अनरिपोर्टेड भी दिए थे, वो अलहदा से दिए थे, जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है। सर, the short point to be made in that respect is that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something My lord, else? I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again, because the second order
was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with two orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had elected... You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. This is, my lord, PLD 2008 Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD, is there a citation? PLD 2008 Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the... What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document, जी, we have given वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology, my lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship knows the reason. You want to launch an attack, or you withdrawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10. And I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord, in a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here, they are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct, and they say if the commission had jurisdiction, okay, got that's the end of the matter. My lord, your lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion, and I move on, if your lordship may then move on to the next relevant paragraph, which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your lordship that it is, and how it is. What is the reason given? My lord, the reason they give is that the petition
filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your lordship, that was a fact which was before them. वो जो जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है जी वो पिटिशन का क्या नंबर है? 287. That's the one they engage with. 287 पहले फाइल हुई थी या 57? 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटिशन। जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है, बट under your according to your lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case, they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटिशन थी लाहौर वाली, क्योंकि यहाँ अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है। मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटिशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता। Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay. वो अब आप देखिए ना, अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया। That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है, Maybe. उनको ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर में। That's correct, my lord. इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाचार जारी है, आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। Gift University, converting knowledge into practical experience. एक दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। दिन भर चेहरे की नमी कम होती है और चेहरा मुरझा जाता है, इसलिए ग्लो एंड लवली की नई हाइड्रा ग्लो। इसमें है रोज सीरम जो चिल्ड को अंदर से नमी दे ताकि चेहरे को मिले खिला खिला ग्लो। जब नमी मिले ग्लो खिले। ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, यह है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। रोशनी की बोल न्यूज।
इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे की तौसीह की थी। पार्टी टिकट जमा कराने के लिए तक वक्त बढ़ाया गया था। आपको हम खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करने का वक्त खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे की तौसीह की थी। पार्टी टिकट जमा कराने के लिए 7 बजे तक का